I'm going to tell you two very simple tips which can help your child drink more water if they are one of those जो बहुत ही कम पानी पीते हैं. ओके ये टिप्स मैंने अपने बच्चे पे बहुत किया है ट्राई किया है. These are very simple ones but they work all the time. By the way, my name is Riddhi and I'm a child nutrition and development behavior expert, and I help parents all around the globe with their child's eating habits. And in this video, I'm going to tell you two very simple tips which you can easily do at home with everything available and up your child's water drinking game. Number 2, summers में मैं ये ज़्यादा करती हूँ. Whenever my child is supposed to drink water and he's refusing कि नहीं पीना या एक सिप पी के छोड़ दिया, and we know कि summers में water हमारी body को ज़्यादा चाहिए होता है, body जल्दी dehydrate हो जाती है. तो जब मैं ice cubes की tray भरती हूँ, उसमें मैं बस थोड़े से chopped fruits डाल देती हूँ. कभी chopped mango, कभी कुछ नहीं हुआ तो पुदीना का एक पत्ता. That's it. 2-3 ही, नॉट मोर. एंड देन जब मेरे बच्चे को मैं पानी देती हूँ, एंड छोटे वाले आइस क्यूब ट्रेज यूज करना, आप बड़े वाले नहीं, मे बी जो राउंड वाले आते हैं छोटे से, वो यूज करो. एंड देन नॉर्मल वाटर में आप आइस क्यूब डालो, 1 या 2 मैक्सिमम, क्योंकि छोटे छोटे हैं. एंड दैट इज व्हेन यू कैन गिव इट टू योर चाइल्ड. आई स्टार्टेड डूइंग दिस व्हेन माय चाइल्ड टर्न्ड 3 years old, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि वो बर्फ का पानी इतनी छोटी उम्र में पिए. द कलर्स इन द ग्लास वुड रियली अट्रैक्ट हिम, और वो उन छोटे छोटे क्यूब्स की वजह से, आइस क्यूब्स की वजह से जिसमें फ्रूट्स हैं, he started to drink more water. Now the next tip, number 1, which really works in all seasons, doesn't matter summer, winter, rainy. What I do is called reverse psychology. मैं क्या करूंगी, एक ग्लास पानी का भर के अपने बेटे को देती हूँ, छोटा ग्लास रहता है. And I tell them, please, एक ही sip पीना, पूरा finish नहीं करना, okay? Just take 1 sip. Don't finish it at all. I am here. You can just have 1 sip. Please don't finish it. And I don't tell him the reason why or what, nothing. I just make this statement. And bam, what happens is he either takes 1 big sip or he takes 5 small ones, or sometimes he even finishes the glass completely. This is called reverse psychology, and it often works, especially the days he doesn't want to drink water and I know he needs water or he has had less water in the day. I try this and it works. Of course, रोज use करूंगी तो शायद उतना effect नहीं रहेगा. So you have to pick chances and then do it. Don't do it every day, नहीं तो novelty wear off हो जाएगी. If you like this video, don't forget to like and subscribe because I share more such interesting tips on nutrition, child meals refusal, what to do when children are only addicted to screen, and so much more on this channel. So don't forget to subscribe and I'll see you in the next video.